Hello, friends. Welcome to a new session. This session is about revolt of 1857, as you can see, and this is a very important event in our history, modern India का history. तो GS पेपर वन के लिए जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री जो स्टार्ट होता है, बेसिकली दिस इज द पॉइंट वेर इट ऑल बिगिंस. एंड 1857 वॉर के बाद ही हम लोग देखते हैं हाउ द ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट्स कॉइनिंग इंडिया एज द टेरिटरीज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर. उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था. एंड 1858 का जो एक्ट आता है उसके बाद द ब्रिटिश एम्पायर, द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड बेसिकली वो लोग इंडिया के अंदर घुसते हैं. एंड देन देर इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच हैपन through regulating acts, through government of India acts, through all the reforms 1909, 1919, 1935, so on and so forth. So to understand all of that, it's very important that we understand what is 1857, why it happened. So basically, as we discussed in the last video, the Europeans had come to India 1498 say, and after that there is a series of advent of Europeans and how they started consolidating power in port cities like Masulipatam and then Surat, and then Job Jarnock in 1690, how he gained Calcutta, and then 1700 में Fort William को बनाया. And after that the French and the Britishers, they got into a war, the Carnatic Wars during the 1748 session. And Carnatic War में ultimately the Battle of Wandy Wash happened, and then the Britishers gained the fuller out of the French. And meanwhile, the Britishers also consolidated the territories of Marathas through the Marathas War. They consolidated the territory of Mysore after the fall of Seringapatam in 1799. And they consolidated the Marathas. 1803 तक मराठा पूरा उनका हो गया था. And the most crucial of it was Bengal, which they got through battle of Palasi, 1757. And Awadh and Mughal Empire they have finally challenged in 1764 in the Battle of Buxar, and Treaty of Allahabad said they got control of Bengal. So now they have a vast territory in their hand. And 1772 में क्या होता है, of course 1757 के बाद जो है लॉर्ड क्लाइव जो है he starts controlling Bengal. And काफ़ी पैसा कमाता है, पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी पैसा कमा लेता है. एंड दे जस्ट एक्सटॉर्ट द पीपल. वो लोग हाई टैक्सेशन कर लेता है. उनको तो डुअल गवर्नमेंट हो ही गया था, दीवानियत निज़ामियत उनको मिल ही गया था. तो ज़मींदार को जो है ज़मीन छीन लेता था और उनको बोलता था कि आप हमारे लिए जो है टैक्स कलेक्ट कीजिए. एंड दे यूज टू एक्सटॉर्ट द यूज द ज़मींदार्स फॉर द पीजेंट्री, एंड दैट्स हाउ दे मेड ह्यूज लॉट ऑफ मनी. And they basically asked for war reparations from all the states which they won. तो इस तरह से वो लोग पैसा बनाता था. तो बेसिकली वो लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता था बेसिकली. एंड 1772 में न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, जिसके हिसाब से परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इन कि 11 में से 10 हिस्सा हमारा, 1 हिस्सा आपका. ये अपने आप पे ज़्यादती था. देन देयर वाज अ सनसेट लॉ कि डेली आप आइए और सूरज डूबने से पहले मेरे को पैसा चाहिए. एंड देन देयर वाज महलवारी एंड रोतवारी सिस्टम, जिसमें जो है रोद जो है मैं रोतवारी सिस्टम में जो है पैसा मैं डायरेक्ट इंडिविजुअल लेवल पे पैसा देता था, और महलवारी सिस्टम में एक पूरा जो है कम्युनिटी जो है गांव मिल के पैसा देता था. सो दिस काइंड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैड कम, जिसका इंडिया के लोगों को एक्सटम्ड नहीं थे. बिकॉज मोर और लेस इन द मुगल एम्पायर देयर वाज एन इकोनॉमिक काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पे टैक्सेशन था, बट इतना भी नहीं था कि ये फार्मर्स जो है इस तरह से ऑप्रेस्ड रहें. And moreover it was a foreign rule, and moreover it was a Christian rule, and it was mingling with the new beliefs and faiths were also mingling with the people, and a lot of factors were happened. So basically, why 1857? Why 1857? Why not before that? So 1857 बेसिकली अप्रैल में जून के टाइम पे एक ऐसा विद्रोह था जो कि इंडिया को एक ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा किया था. एंड ब्रिटिश केम डाउन हेविली अपॉन द इंडियंस and they suppressed the rebellion. So basically why 1857 happened, इसका पहले एक backdrop समझ लेते हैं. 1857 का war के पहले there are many reasons for which 1857 happened. It's like a boiling pot जो कि लगभग 100 साल से उबल रहा था, and it has added to the anger of people. So basically there can be there are economic reasons, there are social reasons, there are political reasons, and there are religious reasons. Now coming to the economic reasons, मेन इकोनॉमिक रीजन्स वेयर ऑफकोर्स न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम 1772 में परमानेंट सेटलमेंट आ गया, सनसेट लॉ,
राइज ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का क्लास, अब जगत सेठ का जो राइज था बंगाल में, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस काइंड ऑफ मनी लेंडर्स दे जस्ट स्प्रैंग आउट इन द सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगान चाहिए, जमींदार्स के पास लगान है नहीं, पैसा है नहीं, अब ब्रिटिशर्स को देना ही देना है। तो मनी लेंडर्स आके बोलते थे कि ठीक है, आप हमसे उधार ले लीजिए, विल डू अ डेट फाइनेंसिंग, और आप जो है बाद में हमें पे कर दीजिएगा। तो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग। तो दिस काइंड ऑफ मनी लेंडर्स वर इन राइज। देयर वाज फैमिन एंड प्लेग आल्सो, काफी फैमिन एंड प्लेग भी हुआ था इस सीजन में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन था कि आफ्टर द लॉस ऑफ द किंग्स, सो किंग्स क्या होते थे, किंग्स वेर द पैटर्न ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड लोकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अब जब किंग्स तो है नहीं, और ब्रिटिशर्स तो इन सब से कोई मतलब है नहीं, उनको हैंडीक्राफ्ट से या लोकल आर्ट से या कोई स्टैचू बना रहा है, कोई स्कल्पचर हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। दे वर जस्ट कन्फाइंड विद द आइटम्स विच दे हैव टू सेल इन यूरोप, बेसिकली कॉटन, पेपर्स, स्पाइसेस, इंडिगो, एक्स वाई जेड। सो ये आर्टिसंस जो थे, इनका भी जो है पेट भरना बंद हो गया और इनका कोई बिजनेस नहीं मिलने लगा। दिस वाज वन रीजन। अनदर रीजन वाज फ्री ट्रेड्स। एज यू सी 1760 अलीवर्दी खान 1717 में he gave the farman to do dastaks, and after that when Mir Qasim was there, what he did was he did a free trade, कि सब कोई फ्री ट्रेड करेगा, ऑल्दो ही थॉट कि ये करके जो है ब्रिटिशर्स को डेंट महसूस होगा, बट एनीवेज देयर वाज फ्री ट्रेड। सो इट वाज अ वन वे ट्रेड ऑफ कॉटन। इंडिया में ही कॉटन बनता था, और वो कॉटन इंडिया में नहीं बिक्री होकर यूरोप में बिक्री होता था, और यूरोप में वो शर्ट और सूट बन के इंडिया आता था, और इंडिया के लोगों को महंगा दाम में खरीदना पड़ता था। सो दिस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन वाज हैपनिंग। सो टेक्निकली दिस वर द इकोनॉमिक रीजंस। नाउ व्हाट वर द सोशल रीजंस? सोशल रीजंस बहुत सारे थे। सोशल रीजंस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देर आर basically 12, more or less, I think, if not less, there are 12 major uprisings which happened in the social scenario. So what is the social scenario? Social scenario is the scenario जहाँ पे peasants, money lenders, zamindars, religious leaders, kings, the disbanded army, the fighters, the Vaishya class, the Brahmins, everybody came together and they rose against the Britishers. So this can be culminated in, singled out in basically 12, I can say, 12 uprisings, very important uprisings. So सबसे पहला अपराइजिंग था 1764 के टाइम ही हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में, सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट बेसिकली बंगाल, बिहार के मुंगेर के एरिया में हुआ था, एंड इट वाज व्हेन द जमींदार्स एंड द सन्यासीज वर कॉल्ड द बाबाज. So these were basically Babas, Muslim Babas, and some Hindus Babas. So they came together, joined hands with the Zamindar, and they revolted against the British Empire. But then Britishers crushed them. So one is Sannyasi Revolution, Revolt 1764. The second is 1766 Dalbhum Midnapur. So after British consolidated the Bengal Empire in 1764, what happened is there was a new, कैप्चरिंग ऑफ लैंड, एंड मिदनापुर दालभूम एरिया में बहुत सारे जमींदार थे जो कि जिनको जो है अपना ज़मीन खोना पड़ा। तो जिसके वजह से जो जमींदार जो थे और वहाँ के जो रोत जो थे, मतलब जो फार्मर्स जो थे, उनको वो मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। सो दिस वाज द 1766 दालभूम मिदनापुर रिवोल्ट. आफ्टर 3 years वी कैन से 1769 मुआमिराज रिवोल्ट. इसमें क्या होता, अनिरुद्ध करके एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, एंड बुरकंदीज मुस्लिम्स जो थे, वो लोग जो है अहोम रूल के अगेंस्ट खड़े हुए थे. सो अहोम रूल वाज देयर एंड दे रोज अगेंस्ट द अहोम रूल्स. तो अहोम rulers, Ahom kings were supported by Britishers. So in a way it was a fight against the British. So number 3 is Momiraz. So number 4 is 1781 Gorakhpur. So गोरखपुर में क्या हुआ था, आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ अवध एंड दिस बिहार एंड यूपी का एरिया, तो गोरखपुर में क्या हो गया, इंग्लिश बिकम द इजारदार्स. इजारादार्स मतलब जो है पहले लैंड कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे. ब्रिटिशर्स लोग बोला कि नहीं यार, अभी हम ही लोग रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे, आपके हाथ में हम लोग नहीं देंगे, हम लोगों को पैसा कमाना है. बिकॉज ऑफ कोर्स दिस वाज द टाइम व्हेन लॉट ऑफ द वॉर्स वर हैपनिंग एंड मराठा वॉर्स वर हैपनिंग, एंड ऑफ कोर्स द वॉर ऑफ मैसूर वाज हैपनिंग. तो इनको काफ़ी पैसे चाहिए थे, तो जिसकी वजह से एक खुद इजारादार्स बन गए. तो इजारादार्स बनने के बाद हैने करके एक ब्रिटिशर्स थे ऑफिसर, वो जो है इजारादार का हेड बन गए, एंड ही एक्सटॉर्टेड अराउंड 22 लाख रुपीज़ इन अ ईयर. सो इससे जो है पेजेंट्स को बहुत इफेक्ट पड़ा. अल्टीमेटली पेजेंट्स किल्ड मिस्टर हैने,
and after that there was an outrage in Gorakhpur in 1781. Basically this is the time when Britishers were funding a lot of wars with this money. Now, for the fourth one can be 1794 Vijayanagaram. So Vijayanagar was an area आज के विजयनगर एम्पायर के पास. तो नॉर्दर्न सरकार जो एरिया है, जो उड़ीसा से लेके आंध्रा के साइड में जो कोस्टल एरिया, वो नॉर्दर्न सरकार था. तो नॉर्दर्न सरकार का एरिया को जो है फ्रेंच जो है अटैक करना चाह रहे थे. तो वहाँ का जो किंग था, दे एंड ब्रिटिशर्स डिफीटेड द फ्रेंच, एंड ऑफ कोर्स द ब्रिटिशर्स सेड कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे XYZ, बट द ब्रिटिशर्स नेवर रैन ऑन देयर प्रॉमिस. तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है बैकफुट में आ गए, अपना प्रॉमिस पक्का नहीं किए. तो उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग बोले कि मेरे को 3 लाख रुपया दो जी, आपको जो हम फ्रांस से बचाए हैं, नॉर्दर्न सरकार बचाए, आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा. वहाँ का राजा जो है, विजयनगरम का राजा 3 लाख रुपया नहीं दे पाया. और उसके बाद देयर वाज अ फाइट इन 1794. ऑफ कोर्स दिस फाइट वाज सबड्यूड एंड ब्रिटिशर्स won it. Then there was a fight in 1799 Seringapatam. After the fall of Seringapatam and fall of Tipu, the Wadiyar dynasty का एक Hindu young king was made the king of Wadiyar, and he was entered into subsidiary alliance by Wellesley. बट वो टीपू सुल्तान का एक फॉलोअर था और उसका एक फ्रेंड बोल सकते हैं. ही कन्वर्टेड टू इस्लाम बेसिकली, एंड ही वाज अ ग्रेट admirer of Tipu Sultan. His name was Dhundia. So what Dhundia did is, after the fall of Seringapatam, he just escaped out of the prison from the Britishers, and then he forged an army, and then he fought the Britishers, and after that he fought bravely, and he was basically captured and killed. So this was the Dhundia revolt. आफ्टर दैट वी कैन सी 1799 में अवध में भी एक रिवोल्ट हुआ था. ये बहुत फनी इंसिडेंट है. बेसिकली सादात अली खान जो है, ही बिकेम द नवाब ऑफ अवध आफ्टर द fall of Awadh into subsidiary alliance. So after Sadat Ali Khan became the Nawab. Of course, as I told you before, Awadh was used as a buffer state for other states like Punjab and Afghanistan. So Awadh का को ये लोग जो है सादात अली खान को जो है दीवान नवाब बनाया. तो सादात अली खान के पहले उसका भतीजा वजीर अली खान था, बट वजीर अली खान को हटा के उसका अंकल सादात अली खान को ये लोग नवाब बना दिया. तो नवाब बनाने के बाद वजीर अली खान ऐसे ही गुस्सा हुआ था, एंड ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द चेंज इन द किंगडम. एनीवेज, सो वहाँ पे जो जनरल था फ्रेडरिक चेरी वाज द लेफ्टिनेंट ओवर देयर इन अवध. तो सादात अली खान, व्हाट ही डिड, ही इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द British Empire and basically his uncle's empire, he called up Frederick Cherry in a lunch, and he killed him. So after killing him, basically there was an outrage, and there was a Awadh mein revolt over there. So this is the basically eighth major one. So I think seventh major one, eighth major one can be ascribed to 1800. द पजासी वर्मन. इसमें क्या हुआ था, केरला का एक राजा था वीरा वर्मन. पजासी वर्मन वाज द लायन किंग, एंड ही वाज वेरी फेमस, लाइक बाहुबली टाइप्स. बट अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके अंकल वीरा वर्मन जो है, ही वाज मेड द किंग, एंड सो पजासी वर्मन, एंड टैक्स वाज लेविड, एंड ही could not give the tax. So Padasi Varman and the peasants and the Nayars and the Pathans and the Muslims and the all faction of people, they just fought against the British. So Padasi Varman got defeated. So this was the rebellion of Padasi Varman. आफ्टर दैट 1800 में एक और था गंजम एंड गुमसूर नॉर्दर्न सरकार में जमींदार के नाम था, जिनके नाम पे बहुत ज़्यादा ज़मीन था. तो गंजम एंड गुमसूर जो है did not pay taxes to the British. So after that there was a successive battles, काफ़ी सारा जंग वंग हुआ, and गुंजुम एंड गंसूर basically they died out. But there was a hero called Dhananjay Bhanj, and he made some alliances with Ganjam and Gumsur landlords, and then he fought against the British. So this was the case of the Ganjam and Gumsur in the northern Sarkars. So as you can see, the reason for telling all those revolts is basically that discontent was spread out across India. So after this there was also Jharkhand में भी there was an uprising in Palamu, जहाँ पे चेरो ट्राइब के जो चीफ थे बुखन सिंह, he fought against the British and Colonel Jones, and it was a good fight, but ultimately Britishers won.
देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पॉलीगर रिवोल्ट, पॉलीगर रिवोल्ट। सो पॉलीगर का क्या होता था 1805 में, पॉलीगर्स वर द पीपल हु वर लाइक सेमी काइंड ऑफ पुलिस। सो वो लोग काइंड ऑफ पुलिस, काइंड ऑफ आर्मी टाइप के जमींदार थे, और उनके पास जमींदारी भी था, और उनका एक अपना आर्मी भी हुआ करता था, वो जगह भी कंट्रोल करते थे, एंड दे वर लाइक इंडिपेंडेंट सॉवरेन। इट्स लाइक इट वाज लाइक अ फ्यूडल सेटअप, and king used to take help from them for the army, and they used to collect tax and so on and so forth. So what happened is the Nawab of Arcot handed out the land to British in 1781 after the fall of wars of during the second war of Seringapatam. So basically second war of Mysore, Arcot got handed to the British. So the Poligar were independent zamindar, and they were not happy with this. So they just organized a fight. So the two main heroes were there, Kotta Bomman and Veer Pandya Kattabomman. Kattabomman and Veer Pandya Kattabomman. They fought against the British. तो जब ब्रिटिशर्स इनको जो है मार मतलब लड़ाई करने के बाद इनको खोज रहे थे, तो वो पुदुकोटाई बोल के किंगडम है, पुदुकोटाई किंगडम में उन लोगों ने आश्रय लिया था, बट द किंग ऑफ पुदुकोटाई व्हाट इट इज he betrayed them and he handed over them to the Britishers. So he handed over the Veer Pandya to the Britishers. उसके बाद वीर पांड्या के डेथ के बाद उसका भाई उमथुराई rose up against the British, and then he made some alliances with the Maduras, and then basically 1805 में पॉलीगर्स को, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इतना कहानी नहीं सुन के एक कहानी सुनिए, उनको कवल टैक्स करके होता था। कवल वॉज बेसिकली पुलिस टैक्स, जो वो लोगों से ले सकते थे रखवाली करने के लिए, ये उनसे स्नैच हो गया था क्योंकि द न्यू पुलिस इन टाउन विद द ब्रिटिशर्स। सो बेसिकली द पॉलीगर दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, and ultimately they lost. So this was one revolt, very important revolt. And another revolt around the same year 1605 1608 के दौरान बुंदेलखंड में, तो बंगाल आफ्टर द after the Maratha war, basically Gopal Singh, the chieftain of Bundelkhand, rose against the Britishers, and Gopal Singh was a hero kind of figure, and he rose against the Britishers, but then he lost. वेलू थम्पी 1808 में वेलू थम्पी करके एक था, वही वेलू थम्पी वॉज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रावनकोर आफ्टर द फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम। ट्रावनकोर वॉज ऑल्सो ब्रिटिश एम्पायर, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। सो वेलू थम्पी का एक बहुत ये था कि ये जो है थक चुका था ब्रिटिश से, कुंडारा बोल के एक जगह था, वहाँ पे जाके कुंडारा प्रोक्लेमेशन दिया था कि यार अब ऑल इन ऑल मारपीट होगा। So this was Kundara proclamation happened to, and he mobilized his troops against the Britishers, but ultimately he lost. So basically what Britishers were doing is they were taking part in the internal affairs of the Veluthampi. So Kundara में proclamation दिया था. So these are the basically the backgrounds of 12 major uprisings which were social in nature. And apart from that, there were religious uprisings also. So people saw Britishers as a direct अटैक टू देयर रिलीजन। सो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था बरेली में क्या हुआ था, पुलिस टैक्स इन लोगों ने लगा दिया था 1816 में। सो 1816 में बरेली झुमका गिरर है बरेली के बाजार में, दैट बरेली, तो उसमें क्या हुआ था, इन लोग पुलिस टैक्स लगा दिया था। तो एक मुफ्ती थे मौलाना साहब, मुफ्ती एवाज, वो जाके पिटिशन दिए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि ये पुलिस टैक्स आपने गलत लगाया, इसको मत लगाइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट ब्रिटिशर्स डिड नॉट हेयर द प्ली ऑफ मुफ्ती आवाज। सो बेसिकली इस झड़प के बीच में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स दे इंजॉर्ड अ वुमन वेरी बैडली। तो औरत पे हाथ उठा दिया, तो दे टूक इट एज दिस थिंग कि औरत पे कैसे हाथ उठा दिया। सो व्हाट हैपेंड इज मुफ्ती के जो फॉलोअर थे, दे टूक अ रिलीजियस कलर एंड दे किल्ड द सन ऑफ लाइसेस्टर, जो वहाँ के गवर्नर थे, जुडिशियल गवर्नर थे। सो दे किल्ड द सन ऑफ लाइसेस्टर। तो बदले में ब्रिटिशर्स ने 300 लोगों को मार डाला, 300 पीपल ब्रिटिशर्स हैड किल्ड जस्ट लाइक दैट। सो दिस बिकेम अ काइंड ऑफ रिलीजियस थिंग। अनदर रिलीजियस रिवोल्ट वाज पाइका रिवोल्ट 1817 में, एक साल बाद ही। सो पाइका रिवोल्ट में क्या हुआ था, बेसिकली इट वाज अ स्यूडो रिलीजन काइंड, बट इट हैपेंड लाइक ए रिलीजन। सो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा इन 803, राजा ऑफ खुर्दा वाज डिथ्रोन्ड। तो राजा ऑफ खुर्दा जो था वो जो डिथ्रोन हो गया, वहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर आ गया, उड़ीसा बिकेम अ पार्ट ऑफ बंगाल सूबा। सो राजा खुर्दा एंड जगबंधु, राजा खुर्दा एंड जगबंधु, दे मेड एन अलायंस एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट जब ब्रिटिशर्स उनको फाइट में हराना जा रहे थे, तब ये लोग जो है, इनके सपोर्टर्स जो है, फेमस पूरी टेम्पल ऑफ उड़ीसा में छुपे हुए थे।
So Britishers what they did is they just came and they just took out people from Puri temple and उनको मारा, और जो priest थे पूरी टेम्पल के उनको भी कत्ल कर दिया. सो पूरी टेम्पल के priest को भी मारा गया, and that how it became a religious overtone, and then people again rose but it was subdued, so it had a religious overtone over there. So एक तो वो मुफ्ती का कहानी था बरेली वाला, दूसरा ये पाइकारी वर्ल्ड का कहानी था. पाइक्स जो थे, the Pikes were the like the local peasants, so they supported Mr. Jagabandhu and Raja of Kurda, and ultimately the priest of Puri temple had to pay the price. 1880 में Wahhabi movement was there. So what was Wahhabi movement? Basically Sayyid Ahmad जो है, he was very much idolized by the teachings of Muhammad ibn Abdul Wahab from the Arabian Peninsula. So what happened is in the 18th century, the Arabian Peninsula, the nomadic Arabs dethroned the Ottoman Empire and they got control of Saudi Arabia on the pretext of pure anti Islam. So this was very much idolized by Mr. Sayyid Ahmad, and he formed a base in Sithana. So in the beginning they were fighting the Sikhs because for them they first brought this theory of Darul Harb and Darul Islam, and they said Sikh जो है Muslim प्रजाति कर रहे हैं, and this is Darul Harb for us, and we have to make it Darul Islam or Darul Aman. And when the Britishers took hold of the Sikh Empire in 1849, now the Britishers became the new enemy. So Wahhabi movement important is क्योंकि the Wahhabi movement gave rise to anti-British sentiments in a big and a large scale. So this is what happened. Another religious movement was the Kuka movement. Kuka movement happened in 1840. So Sian Saab and Ram Singh. Ram Singh was the proponent of Namdhari Sikh, एक sect है Sikhism का. So they rose against the British Empire to restore the Sikh rule after the British took control of the Punjab. So this was the first instance of Swadeshi and non-cooperation movement. So they just they wanted to restore and rejuvenate Sikhism as a religion. So they said no to alcohol, they said no to intoxicants, they said कि marriage caste होना चाहिए, and do away with all sectism in Sikhism. And they practice स्वदेशी movement and non-cooperation movement कि यार हम लोग अपना हाथ के बना हुआ कॉटन पहनेंगे और हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश एम्पायर को. So this is the first instance of Swadeshi non-cooperation movement, the Kuka movement, 1840. After this, one more religious movement was Faraizi Revolt. Faraizi Revolt was during 1838, 1840 से 1857 तक चला था. तो इसमें क्या होता, हाजी शरायतुल्लाह फराइजी मूवमेंट हैपन इन द एरिया विच इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश. सो हाजी शरायतुल्लाह जो थे, ही वाज मुस्लिम सेंट, and he wanted to have a liberal idea of Islam, and he was against the old doctrines of Islam, and he was very liberal, and he wanted secular liberal ideas, and he had a quite number of followers. And उनके जो बेटे थे दुदू मियाँ, he also took forward the revolt against the Britishers. So they fought Britishers, and after that they merged with the Wahhabi movement. So basically these were the religious movements which happened. So Bareli, Paika, Wahhabi, Kuka, and Faraizi. Apart from that, there are some political agitations also, like the Surat salt education in 1840. 1840 में क्या हुआ था सूरत में, गुजरात में. Gujarat has a uncanny resemblance to salt because Dandi March happened in Surat only, where Gandhi ji rose against the Britishers for the salt agitation. And 1840 में भी there was a सूरत salt agitation जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बोला था कि salt पे टैक्स 50 पैसा से 1 रुपया कर देंगे. And the common people did not like the idea, so they fought, and ultimately the Britishers has to introduce the Bengal Standard and Weight Measures Act. So basically these were the backdrops of social and economical upheaval that was happening from 1772 to 1840 onwards. And basically so what was the immediate reason of all this 1857 ka revolt? As you can see, economic and social upheaval ke साथ साथ the sepoy 1857 revolt is also known as the sepoy mutiny, because it was the sepoy which started the mutiny, and it spread across India, and people from all factions and societies and social and economical and religious angle joined from it. So basically it started as a sepoy movement. So what happened is basically sepoys के साथ मतलब जो आर्मी वाले थे,
इंडियन आर्मी वाले थे हु वर्क फॉर ब्रिटिश। सिपॉयज के साथ जो है देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट। सेम रैंक पे अगर अंग्रेज है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता था, सेम रैंक पे अगर ब्रिटिशर्स है इंडियंस है तो उसको कम मिलता था। देयर वाज अ मिस ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स, देयर वाज अ रेशियल काइंड ऑफ थिंग विच वॉज रनिंग एंड इंडियंस वर वेरी वेरी बैडली मिसट्रीटेड। एंड देयर वाज दिस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। जनरल सर्विस में सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के हिसाब से आपको जो है कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं भी जंग करना पड़ सकता है। आप बंगाल के सिपाही, आपको पंजाब में जंग करना पड़ सकता है, आपको कहीं भी जाना जा सकता है। दिस वॉज द हैपनिंग। और इसके बावजूद, आपको बाहर भेजने के बावजूद वो जो है भत्ता नहीं देते थे, फॉरेन अलाउंस नहीं देते थे। उसके बाद टर्बन, जो सिख्स थे उनको टर्बन की जगह लेदर का जो है कवर पहनाने पे मजबूर किया गया था, राइट। सो बेसिकली दिस हैपेंड। सो सिपॉय म्यूटिनी 1857 से पहले 3-4 सिपॉय म्यूटिनी और हो चुका था। 1824 में जो है बैरकपुर में हुआ था। जो बैरकपुर के लोग जो है दे डिड नॉट वांट टू गो टू बर्मा टू फाइट ड्यूरिंग द बर्मा अटैक, बर्मा वॉर्स द ब्रिटिश, बिकॉज उनके हिसाब से हिंदुइज्म में if you do a see wise, it just takes away your religion. And so 1824 में there was a sepoy mutiny in Barakpur. 1824 में एक साल बाद there was a grenadier brigade grenadier company revolt in Assam. And 1838 में there was a revolt in Sholapur. And 1764 में बंगाल में sepoy mutiny हुआ था. That was the first sepoy mutiny. So these were the kinds of sepoy mutiny which were happening, and these were the reasons, basically discrimination in payment, mistreatment, no foreign service allowance, general enlistment act. ठीक है, Vellore mutiny also happened in this time. So technically these things were happening, but what was the immediate reason? What was the spark? Engine on करने के लिए एक spark चाहिए होता है. So the spark was basically the introduction of Enfield rifles. So Enfield rifles में क्या था? There was this say there was this rumor that it had the fats of cow and beef both. So cow was rendered holy by Hindus then, and beef was rendered unholy by Muslims then. So basically the Hindus could not use cow to put in their mouth. So उस जमाने का जो Enfield rifles होता था उसका जो कार्टिज होता था उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था. So the Hindus were not ready to put it in their mouth. It was a direct action, a direct challenge to their religion, and the Muslims were also not ready to put it in their mouth because it was a direct, question to their religion. So what happened is this led to the spark, the introduction of Enfield rifles. So 19th National Infantry in Barakpur. So 19th Native Infantry in Barakpur जो है दे went against this, and मंगल पांडे नाम का एक जवान था 8 अप्रैल 1857 में. He simply not abided by the rules of using the cartridge, and he also fired at an Englishman. After firing him, next day क्या हुआ, उसको मंगल पांडे को शहीद कर दिया गया. उसके जस्ट कुछ दिन बाद, ये तो अप्रैल में हुआ था, मई में, मतलब 9 मई में, लगभग 1 महीना बाद मीरठ में भी ये स्टार्ट हो गया था. कार्टिज का बात मीरठ में भी जा चुका था. तो 3rd नेटिव इन्फेंट्री जो था वो लोग बोल दिया कि नहीं सर, हम लोग जो है ये कार्टिज नहीं यूज़ करेंगे. तो अंग्रेज़ क्या किया, अंग्रेज़ 85 सिपाही को पकड़ के सर्विस से बाहर निकाल दिया और उनको सज़ा दे दिया. 85 सिपाही को जब दे दिया सज़ा, तो 10 तारीख को, मतलब नेक्स्ट दिन, सिपाही लोग से रहा नहीं गया. सिपाही लोग जो है विद्रोह में आ गया, एंड दे जस्ट सिंपली किल्ड ऑफिसर्स एंड दे वेंट टू दिल्ली. They went to Delhi, and they did not know what to do, so they went to Delhi. So formation of war front happened in Delhi. Delhi में क्या था, local सिपाही जो वहाँ के थे, they merged with the सिपाही coming from Meerut, they merged with the सिपाही coming from Bareilly, and so they killed the Lieutenant Colonel of Delhi, Mr. Fraser. Fraser was a big high rank officer, and they killed Mr. Fraser, and they also killed Mr. Lieutenant of Delhi, Valley Boy. So they killed Lieutenant of Delhi, Valley Boy. इसके बाद they did not know what to do, so they just simply went to Bahadur Shah Zafar. And meanwhile बरेली का ट्रूप जो है, मिस्टर जनरल बख्त खान जो है, he was the main general of it. So he was commanding the troops of the Sepoy, and he went and he made the, they wanted to have a central figure around whom the 1857 war could take place.
So they just made the Bahadur Shah Zafar to the head of the empire. So basically it's an empire versus empire kind of situation they wanted to create. Nonetheless, it was a failure because it was not pre-planned. But nonetheless, Bahadur Shah Zafar did whatever he could, and he sent letters and emissaries to all the kingdoms. So he basically sent a letter to Nana Sahib. So Nana Sahib was in the Maratha region, and he killed Mr. Hug Wheeler on 27th June, and he proclaimed Bahadur Shah Zafar to be his king. And Begum Hazrat Mahal was in Lucknow, and she had a son named Bridges. They killed Mr. Henry, who was they killed Mr. Henry, who was the resident in Lucknow. So British force plus Gorkha regiment. It's very important to note that the Gorkha regiment and the Punjab regiment, they supported British while 1857 war. ये लोग जो है अंग्रेजों के साथ थे. So British and Gorkha regiment had wanted to fight back. Begum Hazrat Mahal, who was from Lucknow. So basically Nana Sahib from Maharashtra, Begum Hazrat from Mahal from Lucknow, and we have Bareilly se Khan Bahadur. So Khan Bahadur was also a man. He amassed army of around 40,000 men against the Britishers. And then there was Mr. Kuwar Singh. Kuwar Singh was basically a big landlord, who was almost a king kind of structure in Bihar, and he took the leadership. Although he was an age-old man, around 60 70 years or so, but he took the leadership against the Britishers in 1857 war. And Maulvi Ahmadullah took the leadership from Faizabad, UP. And apart from that, there was Jhansi of Rani of Jhansi. She, along with Nantia Tope, they fought against the Britishers. After that, the Jhansi of Rani was killed, and Tatya Tope fled away, and then he was captured and killed. And there is one more very very important event in history which is generally outlook. There was a person called Shah Mal from Bagpat, UP. Bagpat, UP में शाह मल नाम का एक आदमी था. He was a general normal human, local villager था. But what he did was phenomenal. He organized a rebellion against the Britishers. He made Bagpat a center. There was a bungalow in Bagpat. He used the bungalow, and he had his emissaries. He had his army. He had his espionage. He had his detectives, and he served a common link from UP to Delhi. कोई भी सामान, गोला बारूद, लोगों का आना जाना, डिस्पैच होना, दिल्ली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. He developed a very strong center, and he developed a very strong network. So this is how he did do it. Yeah. So this is what happened ultimately in the 1857 war, and ultimately it died down. It basically took around 1 or 2 years for the Britishers to completely finish off the 1857 war. But ultimately 1857 war was the first war of independence. However, it was not very successful in the sense to dethrone empire. Of course, it wouldn't be successful because there is no standing army, there is no standing king, and all the kings had given out their hope, and it was just a unplanned sparked movement which tried to become a proper movement, but it did not happen. So basically there was a lack of planning, there was lack of ammunitions and arms, there was lack of strategy, and basically south mein it did not have a very far reaching impact in south. It did not have a very far reaching impact in the northeast. And as you can see, the Gorkha regiment and the Punjab regiment, they were with the British Empire, and it did not also have a very high reaching empire in all parts of India. Basically Punjab was left out, South India was left out, and then northeast was left out. And so basically it did not culminate into anything. But technically the Britishers got the shock, and they understood that अब East India Company से ये नहीं चलेगा, so we have to take the rule in our hands. So what happened was Queen Victoria's proclamation in 1858, I think November, when it was decided that the whatever possessions the Britishers have in India, it is in the name of the Queen, and it is Queen's possession of India, British India. And after that, successive changes had come which would face the modern India and our struggle for freedom independence, like 1858 Act of 1858, and then 1909, 1919, 1935, and ultimately
a lot of things which happened between 1935 and 1947, and series of struggle which saw the emergence of great personalities, great leaders, like starting from Tilak, and then Gopal Krishna Gokhale, and then formation of Indian National Congress in 1885, Dada Bhai Nauroji, Surendranath Banerjee, and after that, now we went again to militant nationalism 1909 to 1915, and after the national militant nationalism, there was arrest of Tilak, and a lot of things happened, and after that, so on and so forth, there was a rise of Bhagat Singh and HRPCA and Chandrasekhar Azad and factions, and then there was this rise of leadership of Congress, which a new educated class of lawyers had come up into the scenario in the Congress, and founded by moderates and the extremists. All those things happened, and then ultimately it led to the rise of Gandhi, and then there was this Congress and Muslim League, and ultimately how the question of separate electorates could not be settled, and ultimately it led to both sadly the partition of India, and fortunately the independence of India. So this is how the 1857 war is important, and I hope this was a very easy and nice recap session for 1857 war. Thank you.